While Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's government is focused on development, it is also giving special attention to preserving and promoting the state's cultural heritage. The government has set up development councils and launched projects for all major pilgrimage sites across the state. As part of this, the sacred land of Braj, associated with Lord Krishna, has been given special priority. The Uttar Pradesh Braj Tirth Vikas Parishad has been formed to not only preserve and enhance Braj's religious and cultural legacy, but also to play a key role in boosting spiritual tourism. हमारा ये ब्रज क्षेत्र अपनी इस विरासत को संरक्षित करते हुए निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य शासन दोनों मिलकर के इस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो कुछ भी सर्वोत्तम होगा वो हम करेंगे। Chief Minister Yogi Adityanath is the ex officio chairman of the Braj Tirth Vikas Parishad, under whose leadership Braj is witnessing a revival of its Krishna era glory. In the journey of religious and cultural development, over 2,800 villages across 8 districts of the Braj region are participating. Along the banks of the Yamuna river, several ghats have been redeveloped, including Chintaharan Ghat, Devraha Baba Ghat, Brahmand Ghat, Kesi Ghat, Vishram Ghat and Cheer Ghat. राधा रानी मंदिर की फसाड लाइटिंग, नंद मंदिर का फसाड लाइटिंग, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की फसाड लाइटिंग, केसी घाट की फसाड लाइटिंग, ऐसे और भी कई स्थलों की फसाड लाइटिंग वगैरह का कार्य किया गया है। और रसखान की समाधि, ताज बीबी की समाधि, ये ऐसे स्थल थे बिल्कुल उपेक्षित पड़े हुए थे, उसको एक दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया है। The council has also beautified the 7-kilometer Parikrama path along Govardhan Hill. At the ASI protected Kusum Sarovar, located on the same path, special lighting has been installed and a light and sound show is held every evening depicting the divine pastimes of Radha and Krishna. केवल यही नहीं उद्धव, हम सभी को आज दीर्घात गोवर्धन का भी आदेश मिला है। While the Sapt Devalaya circuit of Vrindavan is also being developed, the council has undertaken beautification of the memorial site of Ras Khan, a great poet and devout follower of Lord Krishna. An interpretation center has been built there to inform visitors about his life, and the site is adorned with special lighting, creating a deeply moving atmosphere for evening visitors. जो आज से 10 साल पहले हम लोग यहाँ पे आते थे तो कंकड़ी थी, गड्ढे थे और कुछ नहीं था इसके अलावा, तो पैरों में चुभन होती थी, पैरों में छाले हो जाते थे, वो चीज़ नहीं है। बाकी रोड बहुत अच्छा है, प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी रहती है यहाँ पर। पहले इधर लोकल के हमारे जो मजदूर भाई थे हम उनके साथ ट्रैक्टर चलाते थे, तो हमारी इनकम 100 से 300 रुपये थी, और यहाँ कम से कम बाहर के इतने व्यक्ति आ रहे हैं जो हम 1000 से 1500 रुपये को अच्छे तरीके से कमा रहे हैं। ये सरकार हमें सबसे अच्छी लगी। That's not all. In Barsana, the government has also launched a ropeway service for devotees to reach the Radha Rani temple. The 210-meter-long ropeway makes the journey much easier, which earlier required climbing 251 steps. A tourist facility center has also been built in Barsana for the convenience of pilgrims. These projects benefit not only the visitors but also the residents of Braj. New livelihood opportunities have emerged in areas such as self-employment, handicrafts, worship materials and tour guiding. Today, Braj has large hotels, dharamshalas and guest houses, significantly boosting local self-employment. कुसुम सरोवर, इसे भी यहाँ पर आज पुनरुद्धार करके लाइट एंड साउंड कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने का काम श्री राधा रानी मंदिर में बरसाना में अब रोपवे भी आज प्रारंभ हो गया है। This development has been carried out like a sacred ritual, and its chief patron is none other than the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. The goal is to create a confluence of faith and modernity so that Braj can reclaim its ancient glory.